Welcome friends, welcome to my channel Rush for Rush. Today we are going to learn about an important aspects of English, that is literary device or figures of speech. In this video we will discuss about the literary devices, or you can tell figures of speech, which is very much necessary to write, that is ornamental English, and it is very much comes in the higher English in class 11 12, also in some of the competition examination. And today we are going to learn about figures of speech. In part 1 we will discuss some of the figure of speech. So first, the content are simile. We will discuss simile and its examples. Also, second will be metaphor with definitions and examples. Then onomatopoeia, the definitions with examples. Then coming to personification, here definition and examples. So let's start. What is simile? Simile, you see, simile means here comparison. हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, जिसको जैसे like और as में. This is used for comparison between two unlike things using the words like or as. You see, the road is as slippery as an eel. He is like peas in a pod. He fought like a tiger. एक टाइगर जैसे लड़ाई की. And he is as wise as an owl. He eats like a pig. All sentences जो हम पढ़े उसमें like और as का यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे simile. Okay. Now will come metaphor. Metaphor is, you see, compares to unlike things and ideas. Unlike things. Time is money. Time is not like money. Time is money. And the world is a stage. The whole world is a stage. World is not like a stage. It is a stage. She is a night owl. He is an ogre, and he is a lion in the battlefield. He is not like a lion. He is a lion, means lion-hearted person in the battlefield. So it is metaphor, because two unlike things are ideas are being compared here. Yes, तीसरा हम जानेंगे व्हाट इज ओनोमाटोपोइया. फ्रॉम दिस वर्ड, इस वर्ड से पता चलता है कि ये जो हमको शब्द साउंड को हम जानेंगे. इट इज ए वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट इज डिस्क्राइबिंग. इट क्रिएट्स ए साउंड इफेक्ट. जैसे कोई नदी का बहना, जनरली हम जानेंगे ये नेचुरल साउंड भी है, और अब कुछ साउंड जो आता है, हुश, स्प्लैट, watch, click, wink, tick tick, like that. These are the sounds which can be produced. Those are called onomatopoeia. Okay. Then coming to personification. Here in personification, that is giving human qualities. हम किसी भी वस्तु को, inanimate वस्तु को या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को हम उसको एक मनुष्य जैसा बनाए. कोई बाघ बात करता है क्या? बाघ बात नहीं करता है, लेकिन हम एक टाइगर बात कर रहा है तो टाइगर बात नहीं करता, हम उसको पर्सन के हिसाब से लिए. सो हम बोलेंगे द फ्लावर्स नॉडेड. पक्षी जो फ्लावर्स है और मुंडी नीचे हो जाए. उनका कोई मुंडी है क्या? नीचे करेंगे नहीं. स्नोफ्लैक डांस्ड, थंडर ग्रम्बल्ड, द फ्रॉग क्रेप्ट इन, द विंड हाउल्ड. Like that, summer tells. Okay. Like I think you can say that is the goat. The goat said to the tiger. The goat cannot talk or the tiger cannot talk, but we have taken at persons. Okay. So we'll know about personifications. Then come to anaphora. It's a very difficult procedure. That is, it is a technique where several phrases or verses begin with the same word or words. You see, I came, I saw, I conquered. Here it starts with I. Mad world, mad kings, mad composition.
We loved, we sang. We word is coming with malice towards none, with just charity for all, with firmness in the right. Here, with has come. We shall not plague or fall, we shall go to the end. We. So here big anaphora. Understood? Now we will discuss about assonance. हम जानेंगे assonance क्या है. Assonance जैसे alliteration होगा हम पढ़ेंगे बाद में. Assonance is the repetition of vowel sounds in words that are close together. आस पास में जैसे कुछ vowel sound है, जैसे हम एक जैसे for the rare and radiant, rare and radiant, maiden, whom, rare, radiant, maiden, whom the angels named, angel name, Lenore. ये आएगा they are for all seasons shall be sweet to thee. अब ई का देखो बीच बीच में आ रहा है. I from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. और ओ जानेंगे और हियर ओल्ड, यस देखो और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथ हॉर्न. ओ का यहाँ पर भरमार है. सो इसको बोलेंगे assonance. देन हम जानेंगे व्हाट इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस मीन्स एक उल्टा, माने एक के साथ हम दूसरा, जैसे इट मीन्स अपोजिट एंड यूजुअली यूज्ड एज ए लिटरेरी डिवाइस टू पुट टू कंट्रास्टिंग आइडिया. दो अलग अलग आइडिया को हम एक साथ जोड़ते हैं. द emphasizes the difference between the two ideas and adds interest to writing. जैसे day and night, Snow White and the Wicked Witch. Day and night opposite है. Snow White एक बहुत अच्छा काइंड का है, लेकिन Wicked Witch अच्छा काइंड का नहीं है. To err is human, forgive is divine. Err and forgive. Give every man thy ear, but few voices. Okay. Now कब हम जानेंगे एंटी क्लाइमैक्स तो क्या होता है. If a figure of speech in which statements gradually descend down होता है in order of importance. Unlike climax, anticlimax is the arrangement of a series of words, phrases or clauses in order to of the decreasing importance. She is a great writer. ग्रेट राइटर हो गया, फिर हम उसको डाउन हो जाते हैं. ए मदर एंड ए गुड, मदर थोड़ा डाउन, ए गुड ह्यूमरिस्ट ये सबसे डाउन हुआ. ही लॉस्ट हिज फैमिली, फैमिली बहुत बड़ी चीज है. हिज कार उससे छोटा, एंड हिज सेलफोन, सेलफोन सबसे छोटा. सो ये एंटी क्लाइमैक्स है. अंडरस्टूड? सो यू लर्न्ड अबाउट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस figure of speech we will learn, we will inform you later in another video. Thank you very much. अगर आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू वेरी मच.